dear friends. In today's video, we will be again starting with a new chapter of 10th standard, and that is arithmetic progression. So arithmetic progression सबसे पहले समझना पड़ेगा कि होता क्या है. तो arithmetic progression is nothing but, as we all know, progression means आगे बढ़ना. We need to progress it. So arithmetic progression is nothing but it is actually a series which have some addition from the previous number. So I will explain you in detail कि क्या होता है arithmetic progression. For example, अगर आपके पास पहला नंबर आपको दिया है 3 and if you add 2 to this number, you will get 5. Again, for 5 you will add 2 to this number, you will get 7. Again you are going to add 2 to this number, you are going to get 9. So my series is, first number was 3. 3 को 2 ऐड किया तो 5 बना, 5 को 2 ऐड किया तो 7 बना, 7 को 2 ऐड किया तो 9 बना एंड सो ऑन. तो एक ऐसी सीरीज बनी जिसको हम 2 2 से ऐड करते जा रहे हैं. So what we are doing is arithmetically we are progressing it, means we are processing through the series. 3 में 2 ऐड किया, जरूरी नहीं 2 ही ऐड करना है. It is some number, some constant number which we need to add. So, जो ये हमारा पहला नंबर होता है, this first number is termed as first term. These are all terms of the series. एक एक नंबर को बोलते हैं terms of the series. So, this is one term, second term, third term, fourth term, and so on. We have infinite number of nth term होती है हमारे पास. There are n number of terms which we have. And पहली term को जो denote करते हैं, first term is denoted as, first term को denote करते हैं a से, छोटा है, small. So we denote first term by small. Now there is a common difference between it. Common difference क्यों बोलते हैं? अगर आप 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 मिलेगा, 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 मिलेगा, 9 में से 7 माइनस करोगे तो 2 मिलेगा. अगर आपको आगे वाला नंबर लिखने को बोला जाए तो आप क्या करोगे? 9 में 2 ऐड करोगे तो 11 मिलेगा, है ना. So there is a common difference. दो नंबर के बीच का डिफरेंस कैसा है? कॉमन है. सो इसीलिए उसको टर्म को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी. एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी. नाउ दिस इज माय फर्स्ट नंबर, दिस इज माय द डिफरेंस व्हिच आई हैव बिटवीन द टू नंबर्स. नाउ द लास्ट टर्म व्हिच वी डिनोट इज लास्ट टर्म. आखिरी वाली टर्म को एल से डिनोट करते हैं. आखिरी वाली टर्म जो इसकी लास्ट टर्म होगी ना, एन टर्म, उसको डिनोट करेंगे एल से. सो द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, कॉमन डिफरेंस इज डी, लास्ट टर्म इज एल. अच्छा, अब एक टर्म को लिखते कैसे हैं? सबसे पहले लिखना सीख लेते हैं. सीरीज बनेगी कैसे? अगर पहली टर्म ए है तो क्या मेरी दूसरी टर्म ए प्लस डी होगी? क्योंकि आई नीड टू ऐड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन इट. यही कर रहे थे हम, 3 के साथ 2 ऐड किया तो 5 बना. दिस वाज माय सेकंड टर्म. नाउ the third term of it will be a plus 2d. If I am going to add twice of the difference with this first term, it will give me third term. A plus 3d, a plus 4d, and so on. And so on. So, इसको बोलते हैं first term. So, it is denoted by a1. इसको बोलते हैं second term, a2. This is third, a3. This is fourth, a4. So it is as simple as, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. 2 या 3 फॉर्मूलेज याद रखने हैं और वो फॉर्मूलेज भी याद रखने की जरूरत नहीं है. आप लोग अगर यदि पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लोगे तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है. इट इज वेरी इजी. लेट्स सी हाउ वी कैन मेक इट इजी. कम ऑन. सो द माय सीरीज इज a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d. ये सीरीज सबको समझ में आ गई होगी. And we write it as a1, a2, a3, a4. These are the number of terms. तो a4 वाला टर्म कौन सा है? अगर मेरे को फोर्थ टर्म पूछा है तो that is a plus 3d. अगर मेरे को सेकंड टर्म, थर्ड टर्म पूछा है, that is a plus 2d. So these are the terms which we have in the series. Each and every number is represented as a term in the series. So I hope the terminologies behind the arithmetic progression must be clear. अगर ये terminologies clear हो गई हैं, I will give you the formula for how to find the terms, nth term in the series, and though by using those formula we can solve number of questions. So let's see, let's proceed ahead. What we can do? Now this is the formula which is used to denote nth term of the series. Nth term of the series. Nth term of AP. Arithmetic progression का short form is AP. तो nth term of an AP, the nth term, आप जो भी term निकालना चाहो तो n is nothing but number of terms. N is nothing but number of terms.
अगर आपको सेकेंड टर्म निकालनी है तो पुट n is equals to 2, so you will get a2 over here. A plus n is nothing but 2 minus 1 into d. And you all know what is a? A is first term. What is d? D is common difference. So if you solve this, you will get a plus 2 minus 1 is 1, which will give you d. Now in the question, they must be giving you the nth term or they must be asking you for the terms. Let's see how we can do that. So this is the way where the formula plays the role. So for an example, अगर यदि आपको ऐसा दिया है an is equals to 2n square plus 3. This is the equation for an term के लिए ये आपको equation दी हुई है और आपको बोला है कि find a3. Find a3. What do you mean by a3? The third term for the series. The third term for the series. How we can find out the third term for the series? Third term मतलब n कितना हो गया? N will be 3. N will be 3. If n is 3, substitute in this. So a3 is nothing but 2 into 3 square plus 3. Fine. 3 square is nothing but 9. 9 into 2 gives you 18. 18 plus 3 will give you 21. So the answer for the third term for the given series is 21. This is how where the AP plays the role. अगर मेरे को पहली टर्म निकालनी होती सीरीज की फर्स्ट टर्म आई नीड टू फाइंड आउट द a1 तो क्या करती n को रखती 1 and if I will kept n as 1 a1 is equals to 2 1 square plus 3 will give you how much 1 square is 1 1 into 2 2 plus 3 will give you 5. So the first term of the series comes out to be 5. Similarly, I can take out n number of terms whatever I want because the equation for the series is given to me. Let's see few more sums. Now the question given to is if an is equals to n cube minus 6n square plus 11n minus 6 find a1 a2 an a5. So क्या दिया है ये equation हमको already दी हुई है nth term की. क्या find करना है a1. a1 means n is nothing but 1. If I substitute in this equation, I will get a1 is equals to 1 cube minus 6 1 square plus 11 1 into 1 minus 6. So 1 cube is nothing but 1 minus 6 plus 11 minus 6. So if I add this, I will get 12 minus 12 which is nothing but 0. So my first terms comes out to be 0 for the given nth equation. For the given nth equation. Now, we need to find the second term of the series. Let us find the second term of the series. N will be 2. So, 2 cube minus 6 into 2 square plus 11 into 2 minus 6. Now, 2 cube is nothing but 8 minus 2 2s are 4. 6 into 4 is nothing but 24 plus 22 minus 6. Let's add it. We will get 8 minus 6. You will get 2. That will be 24 minus 24. Again, it turns out to be 0. So, the second term for the series is 0. Now, we need to find a5. a5 means we need to keep n is equals to 5. n को क्या रखेंगे? 5. n को 5 रखते हैं. Equation में देखते हैं क्या आता है. 5 का cube minus 6 into 5 square plus 11 into 5 minus 6. Fine. Now, can you say 5 cube is nothing but 125 minus 25 into 6. 25 into 6 150 plus 55 minus 6. So, 125 minus 150 will give you minus 25. 55 minus 6 will give you plus 49. And the answer for minus 25 plus 49 comes out to be 24. So the answer for the a5th term for the series comes out to be 24. So this is the way if the nth equation is given and the different terms for the series is asked in the question. Now let's see this sum. If a1 is equals to 3, a1 is nothing but the first term of the series. an is nothing but 3 an minus 1 plus 1 when n is greater than 1. n 1 से ज़्यादा है. Find the third term. Third term means you need to find a3. You need to find a3. So n कितना हो गया? 3. n is 3. You need to find the third term for the series. Now let's see. अगर मैं 3 इधर रखूँ, so you will get a3 is equals to 3 into a. n is 3 minus 1 plus 1. Now a3 is equals to 3. 3 minus 1 will give you 2 plus 1.
A3 निकालने के लिए क्या सेकेंड टर्म की जरूरत है सेकेंड टर्म की जरूरत है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द सेकेंड टर्म फर्स्ट. How we will find out the second term? By keeping n is equals to 2. If I keep in the equation n is equals to 2, let's see what will happen. A2 is equals to 3a 2 minus 1 plus 1. Now if I solve this, I will get 3a1 plus 1. And a1 is already given in the question. We can use the value for a1 and substitute here. So we will get the value for a2, that is 3 plus 1, and it is 9 plus 1, which gives you 10. So the value for A2 comes out to be 10. The second term of the series is 10. So let's see the third term of the series. अभी third term में A2 की value हमको मालूम है 10. क्या मैं ये 10 की value इधर put कर सकती हूँ? So I will get 3 into 10 plus 1. That is 31 is the third term for the series. The third term for the given series. Now along with this you can take out A4, A5, A6 भी आप लोग निकाल सकते हो. Now the question given to us is, अब आपको सीरीज दी है, अभी nth टर्म की इक्वेशन नहीं दी, सीरीज क्या दी है 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, एंड बोला है फाइंड करो 18th टर्म ऑफ द सीरीज एंड 26th टर्म ऑफ द सीरीज. सो अगर यदि आपको इक्वेशन नहीं दी है तो हमारे पास ऑलरेडी वी नो द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म. an is equals to a plus n minus 1 into d, एंड n is nothing but वो टर्म जो हमको फाइंड करनी है सीरीज की. क्या मैं सबसे पहले बता सकती हूँ सीरीज देख करके मेरा फर्स्ट टर्म कितना होगा 5, एंड d is nothing but the common difference between the two numbers. 7 minus 5 will give me 2. So this is my common difference. अच्छा, सबसे पहले चेक करते हैं कि ये सीरीज जो है वो AP में है भी या नहीं. AP में वही सीरीज होती है जिनका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो. So can we see 7 minus 2 will give you 2. Sorry, 7 minus 5 will give you 2. 9 minus 7 will give you 2, 11 minus 9 will give you 2. So you can see here the difference between the two consecutive numbers are constant, and if the common difference is constant, we can say that the given series is an AP series. Given series is an arithmetic progression. So if it is an arithmetic progression, I know my A is 5, my D is 2, and I need to find A18. A18 मतलब मेरा n कितना हो गया 18. So let's substitute A18. We will be substituting in this formula. This is the formula for the nth term of the series. What is A given to us? 5 plus. What is n? 18 minus 1. And what is D? D is 2. Fine. Now let's solve the question. 5 plus 17 into 2. And we all know 17 into 2 gives us 34. And the answer 34 plus 5 will give you 39. Will give you 39. So this is the 18th term of the given series. अगर ये आप ऐसे ही इसको आगे लेते जाओगे 2 से प्लस करते जाओगे तो 18th वाली प्लेस पर आपको 39 मिलेगा. So this is the resemblance of how the AP series is. Now we will move on to 26th term of the series. So we need to take out 26. A26 means n is nothing but 26. N is nothing but 26. So we can write A is nothing but 5. Plus n is 26 minus 1 into 2. D is 2. So it will be 5 plus 25 into 2. So 25 into 2 will give you 50, and the answer comes out for the 26th term of the series is 55. तो इसका यूज क्या है? अगर आपको बोला होता इसका 1000 टर्म फाइंड करो ये सीरीज का, क्या आप 1000 बार इसको +2 करके देखते? नहीं, जरूरत ही नहीं है. जस्ट कीप द वैल्यू 1000 ओवर हियर. आपको 1000 टर्म फाइंड करने को बोला है. ए आपको मालूम है, नंबर ऑफ टर्म कौन से नंबर पे फाइंड करना है वो आपको मालूम है, डी आपको मालूम है, एंड जस्ट यू सॉल्व दिस यू विल गेट whatever number you will get will be the 1000th number of the series. So that is why it is important. It will give you the number, the term, whichever is there in that series at that place. So that is the importance of arithmetic series. I hope आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आने लगा होगा कि arithmetic series होती क्या है. So we will see ahead. Let's see. Now this is a series 100, 90, 80. So what is the first term in the series? 100. तो आप देख पा रहे हो 10-10 का डिफरेंस है. तो सीरीज किस में? AP में. What is D? D is second term minus, that is A2 minus A1. Second term minus first term. What is A2? A2 is 90. ध्यान से देखेंगे. A1 is 100.
So if you do 90 minus 100, it will give you minus 10. So the main important point to be noted over here is this common difference जो होता है, whichever you call as common difference. So note करके लिख लो भले कि common difference can be, it can be positive, it can be negative, or it can be zero. ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो. ये मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज क्योंकि जब तक आप लोगों को फील नहीं आता, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आता कि ये माइनस आ भी सकता है, सो ये ऐसे माइनस आ सकता है. सो इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और इट कैन बी जीरो. सो ये दिमाग से हटा देना कि डी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो पाई. सो इट कैन बी नेगेटिव एंड हमेशा साइन देख करके पुट करना, नहीं तो आपके सम्स गलत हो जाएंगे. क्या फाइंड करना है? A9 फाइंड करना है. मीन्स द नाइन्थ टर्म ऑफ द सीरीज. द नाइन्थ टर्म अगेन वी नीड टू हैव द फॉर्मूला. द nth टर्म ऑफ द सीरीज इज A plus n minus 1 into D. So we have A, we have D, we have n. Put in the formula, we will get the answer. A9 is equals to, n is 9. Remember that A is 100, 100 plus 9 minus 1 into minus 10. Remember it is minus 10. Now this is 100 plus this is 8 into minus 10. So 100, 8 into minus 10 will give you minus 80 and the answer for ninth term comes out to be 20. The answer for ninth term comes out to be 20. So I hope how to find the terms in the given series must be clear. आपको सीरीज दी होगी या nth टर्म की इक्वेशन दी होगी और पूछा जाएगा कि कौन सा टर्म का क्या नंबर आएगा and you can easily find by using this small formula. By using this small formula. Is it easy? Now the question given is, the series to you is given as root 2, 3 root 2, 5 root 2 and so on. Find an means you need to find the equation for the nth term of the series. पहले क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि nth टर्म की इक्वेशन हमको दी जाती थी और उधर से हम लोग टर्म्स फाइंड करते थे. अब पूछा है कि सीरीज दी है, सीरीज में क्या लगता है? फॉर्मूला इज a plus n minus 1 into d. अगर मेरे पास a और d है तो क्या मैं इक्वेशन निकाल सकती हूँ? निकाल सकती हूँ. तो फ्रॉम अगर सीरीज दी है तो सीरीज में से a is nothing but the first term. So first term is root 2. What is d? d is a2 minus a1. That is 3 root 2 minus root 2. 3 root 2 minus root 2 will give you 2 root 2. Will give you 2 root 2. As if you can take root 2 common from here and 3 minus 1 gives you 2. That's why it is 2 root 2. So d की वैल्यू आ गई 2 root 2, a की वैल्यू है root 2. Substitute in the equation. Let's see what will be the answer. a is root 2 plus n minus 1 into 2 root 2. ठीक है. So an is equals to root 2. Multiply in the inside the bracket you will get minus 2 root 2. So you get an is 2 root 2 n root 2 minus 2 root 2. Root 2 minus 2 root 2 will be root minus root 2. So the equation for an comes out to be 2 root 2 n minus root 2. तो ये इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ n. अब आपको बोला जाए कोई भी टर्म फाइंड करनी है, a1 a2 a3 a4 सब फाइंड कर सकते हैं जस्ट बाय रिप्लेसिंग n विद दैट टर्म नंबर. तो मेरे को लगता है अभी कुछ तो समझ में आया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सीरीज दिखती कैसी है, व्हाट आर द टर्म्स इन द सीरीज, क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, एपी को कैसे हम लोगों को आगे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की समझ में आने लगी हुई. सो आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे कि हम लोगों को एपी के अंदर और क्या क्या पढ़ना है. सो देयर आर डिफिकल्ट सम्स. जितने भी सम्स आज हमने करे वो बहुत ही इजी थे ताकि आप लोगों को ये समझ में आ पाए कि एपी बहुत हाउ द एपी वर्क्स, व्हाट डज द एपी टर्म्स मीन अबाउट. सो सबसे पहली बात, वो सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट, उस सीरीज को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. So I hope the terminologies must be clear. अगर terminologies clear हैं तो आगे आने वाले सारे videos बहुत ही easy होने वाले हैं. I hope you must have liked it. If you liked it, please like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.